Good morning, everyone. So, today we are going to start our topic and discussion for the subject heat transfer. In this subject, we are going to study the thorough details that will be that we will be facing for our gate examination. The syllabus has been designed in such a way that it covers all the aspects that will be coming in our gate examination. So now moving on to the distribution of the subject. So the topics that we will cover in this subject is modes of heat transfer. There we will be discussing one-dimensional heat conduction, thermal conductivity, the resistance concept and electrical analogy, heat transfer through extended surfaces that we call fins, unsteady heat conduction and lumped parameter analysis. Then we will move on to the convective heat transfer, where we will study about both the natural and forced convection as well as internal as well as external forced and free convections. Then we will move on to the phase change processes, which incorporates boiling and condensation. Then we will go to analyze the performances of heat exchanger, the LMTD and NTU parameters, and at last we'll cover the radiation mode of heat transfer that will encompass radiation heat transfer, Stephen-Boltzmann law, Winds-displacement law, black and gray surfaces, view factor, and radiation network analysis. So the topic that has been designed here covers all the aspects that we will be facing in our gate examination, and a good part of this syllabus is that it has been structured in such a way that with completion of each segment we will be solving the previous year gate questions, so that we will make ourselves acquainted with, okay, this is the theory, this is the physics behind that, and this is how we will be applying our knowledge that we have gained through this physics analysis into the real life gate questions that we face. And apart from that, we will be having some more questions answers after the completion of each sections to have an enhancement to our knowledge. So prior to going and start with all the topics individually, I will be briefing some of the examples to create an enthusiasm between us that why there is a need to study this subject. Why should we go for analyzing this heat transfer? Initially, we will be starting with this first section, the modes of heat transfer. But prior to that, let us go on to what books, because sometimes it is like that what we will discuss here is from my experience and what I have learned in the past years. I have tried to accumulate all those knowledges in these slides, but there would be some curiosity between you after knowing a little thing about what has been taught in the class. You people might get an interest to come and see, okay, what more or what extra is that, or why we haven't discussed this portion, because in GATE, as we have certain syllabus constraint, we won't go beyond a depth to a given topic. But yes, if you are willing to go beyond that and see why, what, how this phenomenon is happening, you can refer some textbooks also, and we are free for discussing the doubts as well. So to have a look into these things and to have a look that, okay, what we have studied is literally there in our syllabus and what book is good, I have segmented such textbooks for this study. So we will move on to the books. So here are few that I have tried to enlist it. There are n number of books available for the heat transfer, but these are some of the pickies that I prefer for studying and having a clear concept of the subject. So you can have this Incorpora Dewitt, Cengel, and you can have this McGraw-Hill publication book. And this advanced heat and mass transfer is good for the phase change processes, that is boiling and condensation. I have segmented it in such a way that if you want to clean up your basic heat transfer, Cengel and Incorpora Dewitt are very good. If you want to go a little more depth, you can go for this advanced heat and mass transfer by Fagri and Zhang. If you want to study the phase change heat transfer process in quite a depth manner, apart from that we have studied in the GATE syllabus, you can go for this PV Wale. And there are many research articles also available online that you can refer for studying this subject. So this is overall the books, the list of books that would be helpful for you if you want to gain some in-depth insights into this topic that we will be discussing here.
Now let's have a look into a thermal power plant. So this is a source from where we have taken this image for a coal-fired plant. So as you can see, here are some structures. These you can see some gas-like structures are emerging out from there. Here are some tall, heighted constructions have been made, and here it's a schematic or real picture, not a schematic, a real picture of what exact the largest coal-fired plant in US looks like. So I will mention you that some points here that we will be discussing further in this subject. These are the cooling towers, these are the chimneys, and this is the overall body inside which the power generation takes place. How does this power generation takes place? So this power generation takes place in this typical manner. As you can see over here, this is a schematic diagram of the typical processes that involves within a power plant for generation of power. So here we can see some components written here, such as boiler drum, superheater, evaporator, economizer, reheater, boiler, heaters, turbines, generator, cooling tower, condensers. So these are the components that come across together to generate electricity in our power plant. This all encompasses a field view of what basic equipments will be needed to operate a power plant. So each component that has been mentioned over here have a physics of its application, have certain fundamentals behind their working principle, behind their constructions. So what we are going to do here is we will understand what this topic will help us to analyze and study this thing, because our goal to crack GATE examination would be to join some PSUs or to go for some higher studies, whatever. It depends on every individual own's choice. But here comes the thing that, okay, if I'm studying this, where I am going to apply this? So this is the application domain. So here the question comes that, okay, what evaporator is, what economizer is, why the term economy come into a picture of a subject in this schematic of a power plant that we are studying in heat transfer. Then here comes the turbines, here comes the cooling tower. So why we are studying this? So this diagram shows that, okay, the knowledge that we will gain in this subject, in this class, will be agglomerated together and applied towards analyzing this practical view that we are dealing in our day-to-day life. So if we'll move on to let's think it more in a field view applications of a temperature entropy or TS diagram. So the whole system that we have just seen in the previous slide, that has been concluded in this single TS diagram. Here you can see, we know in a TS diagram, these are the isobars. So in the isobars, you can see in some processes, there is some heat rejection portion is there. I mean, one heat interaction is happening over here. So here you can see it is 45 degrees Celsius and here it is 320 degrees Celsius. That means the fluid that is at this position has been taken to this position before it enters into this phase change process, because the phase change takes place within this dome. So here the fluid has been taken from here to here. That means certain heat is being transferred to the fluid in which its energy is enhanced and its temperature is enhanced to carry it from this position to this position. Again, the temperature has been increased. Then what happened? We have made it to go through certain process where we try to reduce its temperature. Again, the temperature is extracted more in such a way that its phase changed from this vapor or this two-phase zone to saturated liquid zone. Hope you guys are acquainted with this dome from the thermodynamics aspect. This regime is the subcooling regime. This regime is the superheated regime, and the line is the saturated line. This line is the superheated line, and the point where the saturated liquid line and means where we can distinguish the saturated liquid and saturated vapor line. This is not the
real definition of this point, but I am just explaining here that suppose this is the point below which there is a saturated liquid and beyond which there is a saturated vapor line. So after this point, there no phase change takes place. Your liquid will directly convert it to gas without going through a phase change processes. So all these terminologies you are acquainted in the thermodynamics. So here the basic way to show this example over here is कि हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि हमने हीट ट्रांसफ़र किया, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे टेम्परेचर कम किया, यहाँ से उसकी फेज चेंज कराई है, यहाँ से भी हीट दे के उसकी फेज चेंज कराई है. सो ऑल दोज प्रोसेसेस दैट आर accumulately working behind the power generation is something a driving force for us to learn. Okay, why we should study this heat transfer? This is basically an engineering aspect of what we will be going to study in the heat transfer. Let's go to a day-to-day example. We have a hot glass of milk to consume, and it is too hot in this climatic condition that we cannot take it directly. So what we do, we take a container full of a fluid whose temperature is very much less than the glass full of milk. Then we used to stir that milk. So gradually what happened, the heat is transferred from the glass to the water. The water temperature rises up and the temperature of the liquid decreases, and we drink it. That means the heat is being transferred from this glass of milk to this container. So this process, a day-to-day life example that we do in our home, is also a driving force behind our behind developing the curiosity within us, that why we should go and learn and study the heat transfer aspect. So this is a typical data of coal power thermal plant. Why I have mentioned it over here, to see that okay, in our day-to-day life how we are using our means like resources available, either it be renewable or non-renewable, what resources we have today, at what magnitude we are exploiting it to have the life that we are living now. In this topic of heat transfer, let us ask few questions first to us that we have discussed in the previous slides, that what heat is, then what heat transfer is, then how heat transfer is important for us and why it is important for us to study. Then we'll move on to how heat transfer is different from thermodynamics. Why do we need to study heat transfer where we have studied the thermodynamics? So we have to answer all these questions. So primarily, before getting into what heat transfer is, let's get into some insights that it is observed in many books that heat transfer is a thermal energy in transit. So modes of heat transfer: conduction, convection, radiation, boiling and condensation are the processes in which phase change takes place. It incorporates conduction, convection and radiations also. So that is what heat transfer primarily teaches us or tell us what it is. So let's have a bigger picture insight into this. So supposing if what we will see that before getting into what heat transfer is, let us get into the thing, what do you mean by the word temperature? What do you mean by the word temperature? So what usually happens that when we come across the word temperature, most of the thing that comes up to our mind is कि it is the degree of hotness or coldness of a substance, but practically it is not. This is not the right definition to say temperature is the degree of hotness or coldness of a body. Why? Suppose I maintain this room at 30 degrees Celsius. Okay, I have a metal, I have a plastic, I have a glass of water. So if you will touch the metal, you will feel some colder temperature. If you will hold the plastic, what you will see, it is at a low temperature, but it won't feel that cold as what this metallic surface will feel. Same as when you will touch the glass of water, you will feel it is normal, it is at the room temperature only. So if here what we come to know, that if we consider a system under equilibrium, अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम मैनर में है, उसके अंदर हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट में है.
अगर वो इक्विलिब्रियम में ना हो तो हम उस सिस्टम को कभी भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के एनालिसिस पे नहीं ले सकते हैं. सो इफ इट इज अंडर द इक्विलिब्रियम इट शुड पोजेस द सेम फीलिंग, but here it is not. So you cannot call that degree of hotness or coldness of a body is its temperature, क्योंकि दोनों 30 डिग्री पे ही है, पर प्लास्टिक आपको को मेटल के कंपैरिजन में कम ठंडा महसूस हो रहा है. दैट डजंट मीन कि दे बोथ आर एट डिफरेंट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या होता है? सपोजिंग इफ हमारे पास दो सिस्टम हैं, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, और ये दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में. इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, थर्मल equilibrium. If two systems are in thermal equilibrium with each other, then the property that is same for both the system is called as temperature. Remember this definition. When two systems are under thermal equilibrium, the property that is same for both the system is called as temperature. एक सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में ले आते हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दोनों के बीच जो प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड सेम होगी वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर होता है. सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हाट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज? इफ अ सिस्टम इज in physical equilibrium, in chemical equilibrium, in thermal equilibrium, and it has also equilibrium in its composition, then we will say the system is under thermodynamic equilibrium. Thermal equilibrium is a part of a thermodynamic equilibrium. तो अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में है, इट हैव टू हैव बीन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. बट इफ अ सिस्टम इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, we cannot say that it should be in thermodynamic equilibrium. Hope you are clear into this कि अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिक, लेट मी राइट थर्मोडायनामिक्स एज TD, अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, it is bound to be in thermal equilibrium. But if a system is in thermal equilibrium, it need not to be in thermodynamic equilibrium. So अभी हमें पता चला कि टेम्परेचर क्या होता है. So as we are acquainted with the terminology of temperature, so we have a temperature A, suppose a temperature B, and temperature A is greater than temperature B. तो हमें ये पता है कि हम इन दोनों को अगर पास में लाएंगे तो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम दिस हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी. हाउ we come across to know this? This has been stated by the second law of thermodynamics that we will study further. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने टेम्परेचर क्या है पता किया, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है पता किया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है पता किया, एंड वी केम अक्रॉस टू नो दैट ओके what is the distinction between thermodynamic equilibrium and thermal equilibrium. If we look into this aspect, तो हमें एक चीज ये पता चल रही है कि a system that is in thermal equilibrium need not to be in thermodynamic equilibrium throughout our analysis. So if we will move further, what will come across to know that what heat transfer is. So to before going into the topic, अगर हमने खुद से ये सवाल पूछा कि टेम्परेचर क्या है, नाउ वी हैव द आंसर. अभी क्वेश्चन आता है फ्लूइड क्या होता है. ओके, सपोजिंग इफ समवन विल आस्क यू कि फ्लूइड क्या होता है, नॉर्मली वी आंसर दैट एनीथिंग दैट फ्लोज इज अ फ्लूइड. ओके, अगेन this is not practically and scientifically the correct statement to say something about what fluid is. Yes, that is correct, that fluid is a state of a matter, but how will we define कि fluid क्या होता है? So fluid is that state of matter which deforms continuously under the application of shear stress, whatever small be the magnitude of stress that shear stress would be. So what is fluid? अगर ये एक मेरा पार्टिकल है, मैंने इसको एक shear stress दिया, तो shear stress देने के समय में
इसमें एक डिफॉर्मेशन आया, तो व्हाट एवर स्मॉल मैग्नीट्यूड वुड बी देयर, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिला। तो इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ मैटर होता है, स्टेट ऑफ मैटर होता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। सो व्हाट इज फ्लूइड? इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। Fluid is a state of matter which is described in such a way that if a substance deforms continuously under the application of shear stress, yes, under the application of shear stress, whatever small the magnitude of that shear stress be, is the fluid. So हमें अभी पता चल गया कि फ्लूइड क्या होता है, टेम्परेचर क्या होती है। नाउ व्हाट इज हीट ट्रांसफर देन? तो हमें हीट ट्रांसफर के बारे में ये जानना है कि द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वो एनर्जी जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होगी, उसकी जो स्टडी हम करते हैं, दैट कम्स अंडर द हीट ट्रांसफर। सो हमने टर्मिनोलॉजी जस्ट पहले पढ़ा था, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो लाइकली वी कैन गो समथिंग टू बी, हम बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। सो व्हाट थर्मल एनर्जी इज? थर्मल एनर्जी इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपको भी पता है, अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो दोनों की टेम्परेचर सेम है। अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो दोनों की टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग होंगी। व्हाट दैट मीन्स, व्हाट दैट इफ देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम, it will have same temperature. So thermal energy is a function of temperature of a system. So thermal energy is associated with the temperature of a matter. So अगर एक गिवन सब्सटेंस है जिसकी एक पर्टिकुलर मास से स्पेसिफिक हीट है, देन ग्रेटर द टेम्परेचर, मोर विल बी द थर्मल एनर्जी। सो अगर उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ अ सब्सटेंस इज एट अ टेम्परेचर ए and we have another substance at temperature B, where the temperature of substance A is greater than the temperature of the system B, then the thermal energy that is transferred from the system A to system B is the process that we study under the topic of heat transfer. So what heat transfer is? Heat transfer is study of the exchange of thermal energy through a body or between bodies which occurs when there is a temperature difference. मुझे बुखार है, नॉर्मली बिफोर गोइंग टू गेट अ थर्मोमीटर हम हाथ से चेक करते हैं। व्हाई? बिकॉज if there is a patient who is suffering through fever and there is a person who is at normal human body temperature, if that person will touch that patient, he will feel quite higher temperature, means that person will feel some higher magnitude of energy or temperature in that body. So we decided, okay, that human to whom we are touching is feeling warm, he or she might have fever. So this is what heat transfer study encompasses. So when two bodies are at different temperature, the thermal energy that is associated with the higher temperature will transfer to the lower temperature, and we know that heat will always flow from high energy state to lower energy state, or energy is transferred from higher energy state to lower energy state. Similarly, heat will transfer from high temperature to low temperature, and the rate of heat transfer is measured in terms of what? So what do you mean by the rate of heat transfer? Here heat is being transferred from body A to body B. What's the unit is? Joule. Heat is a form of energy, so joule. पर ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर होने के लिए इसको कुछ समय लग रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट यू विल टच एंड इट विल ट्रांसफर कंप्लीटली. It will take some time to reach that equilibrium state. So the heat transfer divided by that unit time is called as the heat transfer rate, and its unit is watts. So its unit is watts, joule per second, and this heat transfer rate per unit area is known as heat flux. So what the heat flux is, we will gradually understand, analyze in the further more topics. So prior to that, what we understood, the rate of heat transfer is expressed in watts because of joules per second, and this rate of heat transfer per unit area is heat flux.
So here comes the question, okay, we understand what is thermodynamic equilibrium, what uh, thermal equilibrium is, what heat transfer is, what is heat. So अगर हम, और हमने यहाँ पे एक चीज भी पढ़ा, heat is transferred from high temperature to low temperature, जिसे I have told that it's the second law of thermodynamics, the Kelvin Planck statement of the second law of thermodynamics. So फिर हमें हीट ट्रांसफर पढ़ने की क्या जरूरत है? Why didn't we go along with analyzing the thermodynamics aspect to analyze these processes? क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी वेपर पावर साइकिल्स, गैस पावर साइकिल्स पढ़े हैं, टीएस डायग्राम्स पढ़े हैं, जो मैंने आपको अभी कुछ स्लाइड्स पहले दिखाया हुआ है. देन व्हेयर कम्स द नेसेसरी? So what necessitates the study of heat transfer beyond thermodynamics? So if we'll get into that, so let's have a comparison and analysis कि हमें thermodynamics और heat transfer में primarily difference क्या है, and why we are focusing our analysis towards the heat transfer part by the help of thermodynamics that we have. So अगर हम जाएं ये चीज को देखने के लिए, thermodynamic is basically of 3E. ओके, सो थर्मोडायनामिक्स का 3 का क्या मतलब होता है? इट स्टेट्स इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी. 3 ईज का होता है, इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी. सपोजिंग इफ मेरा एक सिस्टम है, आप देख सकते हैं, सपोज ये मेरा एक पीवी डायग्राम है, मेरा एक प्रोसेस हो रहा है. सपोज दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेट 1 and reaches to state 2. So thermodynamically this is a equilibrium process. What would be means the work done, area under the curve हमें पता है. और ये जब सिस्टम 1 से 2 जा रहा है and I ask what is the heat transfer, you will say sir that will be magnitude whose units comes in joule. Why? Because thermodynamics deals with the study of the heat transfer processes from one system to other. Okay, equilibrium system in quote. So here it is the equilibrium state, it is the equilibrium state. So 1 से 2 आया, कितना हीट ट्रांसफर, कितना हीट इसमें किया, यूटिलाइज या एब्जॉर्ब किया या रिजेक्ट किया, जो भी किया, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जूल्स. ओके, सो what the amount of energy is needed is expressed in terms of heat to pass from one equilibrium state to other equilibrium state. If I will ask you instantaneously what is happening, instantaneously what is happening is not discussed or disclosed in thermodynamics. So thermodynamics जो हमें बताता है equilibrium, energy, entropy, it's basically deals with the transfer of heat from one equilibrium state to another equilibrium state. अगर यहाँ पे कहीं भी कुछ इंस्टेंटेनियस टर्म्स की बात आ जाती है, हीट ट्रांसफर डजंट वर्क. बट हीट ट्रांसफर प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर स्टडिंग, thermodynamics provides the basis for studying the heat transfer. Let me correct myself again. Thermodynamic lays a base stone for studying the heat transfer. How? The zeroth law of thermodynamics, it says that if a system A is in equilibrium with system B and system B is in equilibrium with system C, then system A will be equilibrium with system C. This is where the role of temperature comes into picture. Then we will move on to the first law of thermodynamics, that is the conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another. That aspect is also covered. And in the second law, as I discussed in the Kelvin Planck statement, that heat is transferred from high temperature to low temperature. Though it shows that heat has a direction that flows from the high energy, high temperature to low temperature. Heat has a magnitude also. So this is the way why we distinguish that, okay, thermodynamics has these limitations that has been taken away by the heat transfer, and we are going to study the heat transfer. Let's move on to a mathematical application to study this thing in a detailed way. Suppose we are having a body A and a body B. So the body A is having a fluid in it, a liquid in it. Suppose मैंने एक स्टील बॉल लिया है और उस बॉल का मास मान लीजिए m है, स्पेसिफिक हीट C है. सो और इसकी टेम्परेचर सपोज है T1.
ये जो पानी है, ये पानी का टेम्परेचर मान लीजिए है T2 और पानी मास M2 में है, और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो मान लीजिए C2 है, और इसको हम 1 में डोनेट कर लेते हैं. सो इफ आई विल ड्रॉप दिस बॉल into this fluid and my temperature T1 is greater than T2. अगर मैं ये हाई टेम्परेचर बॉल को इस पानी में ड्रॉप करता हूं और मेरा टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो मुझे क्या पता है, जब ये पानी में बॉल जाएगा तो ये पानी का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्यों? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर है, हीट ट्रांसफर होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा. सपोज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बी Ti, टी इंटरमीडिएट, जो कि T1 और T2 के बीच में होगा, हमें पता है, इसलिए मैंने उसको Ti दे दिया. सो हियर इफ आई विल कंसीडर द सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके, द M1 C1 T1 minus Ti is equals to M2 C2 Ti minus T2. So इस एक्सप्रेशन से we can determine the value of Ti if the system is under equilibrium condition. Supposing if this Ti comes to be 50 degree Celsius, suppose Ti 50 degree Celsius आया. If I will ask this question कि at what time the fluid temperature will reach 50 degree Celsius, बॉल पानी में गिरेगा, फिर पानी की टेम्परेचर 50 डिग्री जाएगी, दैट इज मेंशन ओवर हियर. बॉल पानी में गिरा, कितने टाइम के बाद वो 50 डिग्री में पहुंचेगा? Does thermodynamics have this answer? No. If I will ask, okay, let's change the question. If I will ask 10 सेकेंड के बाद पानी का टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड आफ्टर 10 seconds? Can thermodynamics answer this also? No. So here comes where if we have to understand and analyze instantaneously the application of the heat transfer, we have to study the heat transfer processes. So here overall I will not say that thermodynamics हमें require ही नहीं है to study the heat transfer. No, as discussed, it gives the base for studying the heat transfer processes. Now, moving on to our next section, that of the introduction of heat transfer. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हीट ट्रांसफर हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरत है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, कुछ हमने पावर प्लांट्स देखे, रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझा, कुछ हमने समझा कि टेम्परेचर क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एंड हाउ दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाई we have to study the heat transfer rather than going for the thermodynamic aspect. So if we'll move on to the heat transfer, we will see that the heat transfer through a body takes place through 3 different processes. What are those? Those are the modes of heat transfer. और वो modes कौन कौन से होते हैं? वो modes होते हैं conduction, convection और radiation. कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन एक चीज होती है कि सपोज हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हमने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के एक साइड में एक हाई टेम्परेचर रखा है, तो वो टेम्परेचर उस सॉलिड के थ्रू पास करके दूसरे साइड पहुंचेगा, isn't it? So the mode of heat transfer in which the diffusion of energy is due to random molecular motion through the object or through the substance is conduction. So conduction को हम कैसे इक्वेट करते हैं? फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन से, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, which states that heat flux is equals to minus k dt by dx. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में. देन कम कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है? सपोज हम अभी ले लेते हैं वो दूध ठंडा करने वाला एग्जाम्पल. हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, उसके अंदर एक दूसरा कंटेनर है जिसमें वार्म लिक्विड है. तो वो वार्म लिक्विड से कोल्ड लिक्विड को हीट ट्रांसफर हो रहा है. कैसे? वो वार्म लिक्विड का कंटेनर से, फिर वार्म लिक्विड के कंटेनर से एनर्जी जो वो कोल्ड लिक्विड में प्रोपेगेट हो रही है, वो क्या हो रही है? उसके जहाँ पे सरफेस टच हो रहा है
वहाँ से किनारे तक। फॉर एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू शो यू ओवर हियर कि ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी रखा है और इसके अंदर मेरा दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर वो वार्म लिक्विड है। सो टी हाई, इसको टी लो दे देते हैं। तो मेरा टी हाई टू टी लो हीट कैसे ट्रांसफर होगा? पहले तो हीट इस कंटेनर को पास करेगा, फिर इस कंटेनर से इस पानी में आएगा, फिर पानी के इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा। सो हियर द एनर्जी इज बीइंग डिफ्यूज्ड फ्रॉम द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एंड ड्यू टू द बल्क मोशन। यानी यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन बल्क मोशन ऑफ लिक्विड भी हो रहा है एंड थ्रू द solid substrate भी हो रहा है। So the mode of heat transfer that includes conduction and advection is convection. So convection को हम क्या लिख सकते हैं? Conduction plus advection. Now comes the radiation. What radiation is? The energy that is transferred by the electromagnetic waves. और radiation एक ऐसा mode of heat transfer है जो कि vacuum में भी हो सकता है, where these systems mode of heat transfer नहीं होता है, and radiation takes place at very high magnitude of temperature as well. So Newton's law of cooling को हम दिखा सकते हैं for convection, that we will study in details in the subsequent classes. So as for radiation we have 5 different laws, but primarily we use this Stefan-Boltzmann law that has been shown here. So हमने 3 mode of heat transfer पढ़ा। पहला है conduction, convection and radiation. So conduction क्या होता है? Conduction होता है कि हमारे पास अगर एक solid substrate है, उसके एक साइड में एक हाई टेम्परेचर है और वो हीट एनर्जी क्योंकि हाई है, दूसरा साइड लो टेम्परेचर पे है, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो वो एनर्जी जो एक सॉलिड सबस्ट्रेट के थ्रू ट्रांसफर होगा, सो द एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड सबस्ट्रेट बिकॉज देयर इज अ टी हाई एंड टी लो एंड टी हाई इज ग्रेटर देन टी लो। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा कंडक्शन। कन्वेक्शन में जहाँ पे आपका कंडक्शन और एडवेक्शन हुआ। सो These are the modes of heat transfer. अभी conduction जो होता है solid के through, it is equated by the Fourier's law of conduction. अब conduction होता कैसे है? Suppose we have a solid object. उस solid object में हमारे जो molecules होते हैं वो highly attracted और bonded to each other होते हैं. Yes or no? So if we have a body in a solid, the atomic structure, if we'll go, they are highly compact and strongly bounded to each other. The molecular force of attraction is very strong in them. So अगर ये मेरा arrangement है molecules का, so these are very strong, very closely packed, very tightly packed and structurally arranged, जिनके अंदर voids ज़्यादा नहीं होते हैं, and it is arranged in a very रेगुलर मैनर। सो इस केस में क्या होता है, जब मैं इनको एक एनर्जी देता हूं जो कि थोड़ा हाई होता है, सपोज इट इज एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड आई जस्ट ट्राई टू इंक्रीज इट्स एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या होगा, इनके थ्रू प्रोपेगेट करेगा। हाउ इट विल प्रोपेगेट? पहले तो मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स एट अ स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट, जब उनको हाई एनर्जी आएंगी तो दैट मॉलिक्यूल विल स्टार्ट vibrating or having a motion between them. So the structured arrangement, 3D array arrangement of atoms और ions और molecules को हम लैक्टिस बोलते हैं। तो उन लैक्टिस में अगर कुछ इस तरह से वाइब्रेशन आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनर्जी, सो दैट इज टर्म्ड एज लैक्टिस वाइब्रेशन, लैक्टिस वाइब्रेशन। एंड दूसरा क्या हो सकता है कि अगर उनके अंदर आयंस हैं, एटम्स हैं, हमने उनको एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अगर उनके हायर एक्साइटेशन स्टेट में है, इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, इट विल ट्राई टू जंप, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो इन केस ऑफ कंडक्शन, द डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन बेसिंग ऑन टू थिंग्स, दैट इज लैक्टिस वाइब्रेशन एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लीड्स टू दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर हम इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को और थोड़ा डिटेल्स में देखें तो ये हमें क्या बताता है, दैट इफ देयर इज अ सिस्टम एंड
it has a lattice structure arrangement in which the energy is transferred from high state to low state. It have to undergo two processes, lattice vibration and motion of free electrons, to conduct heat through that. Okay, that is what conduction is. So हमें अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने ये जान में आया कि heat transfer has direction as well as magnitude, और the rate of heat conduction is proportional to the temperature difference. Okay, ये हमें पता है, and is also related to somewhat of its thickness. क्योंकि अगर मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जिसकी विड्थ a है और एक सिस्टम ले रहा हूँ जिसकी विड्थ b है, एंड सपोज a इज हायर देन b, एंड दोनों का एक साइड में T हायर टेम्परेचर इज सेम, so the lower temperature will depend on the length. Okay, how it will depend we will analyze now. So supposing if we have a system in which there is a temperature T1 and here it is a temperature T2, and suppose ये system को हमने 3 dimensionally show करने की कोशिश की. Let's take some cross section over here. एक section ले लेते हैं. तो what we will analyze here कि मेरा अगर heat यहाँ से flow हो रहा है, if my heat is being transferred through this surface, तो वो heat इधर से pass करेगा obviously, क्योंकि एक body है. Suppose the distance of this body is x. ठीक है, तो मेरा ये जो हीट जा रहा है ये इस बॉडी के थ्रू दूसरे साइड आ रहा है, और ये जो हीट आ रहा है आप देख सकते हैं दैट हीट इज एक्टिंग नॉर्मल टू द एरिया और द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिस्टम. so heat transfer always takes place perpendicular to the isothermal surface. ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक टेम्परेचर T1 पे, एंड दैट टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. हीट इज फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस एंड इट विल, वी नो इट विल कम टू दिस टेम्परेचर T2. तो ये हीट जो फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इट विल फ्लो नॉर्मल टू दिस आइसोथर्मल सरफेस एंड विल रीच हियर. सो अगर हम ये देखें तो दिस Q इज समवॉट प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा हीट ट्रांसफर कम होगा. हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया एंड हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस थिकनेस. तो ये चीज़ मैंने कहाँ से कंक्लूड की ना? ये चीज़ मैंने कंक्लूड की फ्रॉम द एनालिसिस दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय फोरियर. फोरियर क्या बोलते हैं? अगर एक मेरा बॉडी है दैट इज अंडर maintained at a temperature T1 in the higher side and a T2 in the lower side, and a heat flux is being flowed, और उस बॉडी में मेरा कहीं भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो हीट जनरेशन. अब ये हीट जनरेशन क्या होता है ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. इफ देयर इज नो हीट जनरेशन and the system that we are studying is having a higher temperature and heat is flowing normal to the isotherm to the other side that is at lower temperature, and with this with a thickness of the slab or the system of x, then that heat is proportional, heat transfer rate is proportional to the temperature difference between the object, is proportional to the the area of the isothermal wall, and is inversely proportional to the what? Thickness of the slab. Sometimes what we write that temperature is moving to from T1 to T2, so we write it T2 T1. Okay, क्योंकि we take ना final minus initial, so Q इधर आ गया, तो this is our final state, it is proportional to T2 minus T1. Writing T1 minus T2 is not fundamentally wrong, but as we follow the nomenclature of thermodynamics, let's consider it to be
proportional to T2 minus T1. तो इस चीज को अगर मैं इसे एग्लोमरेट करूं तो व्हाट कैन आई राइट, दिस Q हीट ट्रांसफर रेट इज प्रोपोर्शनल टू T2 minus T1 divided by X into A. Okay, remember this equation, this Q is proportional to T2 minus T1 into A by X. So from here अगर मैं ये proportionality constant हटा दूं तो यहाँ पे एक constant आ जाएगा और एक टर्म आ जाएगी. ओके, दैट वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली. सो हम ये जान रहे हैं कि यहाँ पे ये एक चीज़ देख रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ये हीट जनरेशन नहीं हो रहा है एंड इट गोज थ्रू अ स्टेडी स्टेट प्रोसेस. सो फॉर अ सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन with no heat generation, what does the Fourier's law of heat transfer states? That Fourier's law of heat transfer states that when a system is under steady state condition undergoing no heat generation, then the heat transfer rate is directly proportional to the temperature difference, is directly proportional to the area of the isothermal wall, is proportional to the thickness of the system inversely. That can be expressed as Q is inversely proportional to T2 minus T1 A by X, and we can write this equation as Q is equals to minus K A T2 minus T1 divided by X, and this is the Fourier's law of heat conduction that is discussed over here, minus Ka dt by dx. Okay, so what is this my K and why this negative terms came? This negative terms came in the picture that when we will solve this thing, this minus can be taken into consideration and it will say the flow or the right direction of the flow of heat energy, that is from high temperature to low temperature. अगर ये देखें तो ये हमें क्या बता रहा है कि heat is being transferred from low temperature to higher temperature. That is not correct because of the statement of Kelvin Planck that we studied in the second law of thermodynamics. So in order to eradicate this or in order to make this in a right way that we have studied from the physics, what we do is कि ये जो माइनस टर्म है ये इस चीज को बैलेंस करता है and that can be written directly as K A T1 minus T2 divided by X. So now you can see what this heat transfer rate shows us. So this heat transfer rate that is showing over here is what mentioned by the Fourier, and this unit will be in what, because we are discussing as heat transfer rate. So अभी ये K क्या है? This K is known as thermal conductivity. ये K को हम क्या बोलते हैं? K को हम बोलते हैं thermal conductivity. So what thermal conductivity is, we will study now. तो ये Fourier's law of heat conduction किन conditions के लिए applicable है? Steady state, no heat generation and unidirectional heat flow. Correct? Unidirectional heat flow. So what we have studied from now is कि if a system is undergoing a steady state, that means वो time dependent नहीं होता है. If it is not going through a steady state, then वो unsteady हो जाएगा and it will be time dependent. So we can express one dimensionally if a system is unsteady, it will be either a function of its dimensions x, y or z. If it is two dimensional, it will be either of the two of the dimensions. If it is three dimensional, it will be either the function of all. It will be all functions of all the three dimensions that are available. अगर unsteady आता है, here another factor will come into picture and that is the time. Again अगर unsteady हुआ तो यहाँ पे टाइम वाला फैक्टर भी आ जाएगा हमारी एनालिसिस के लिए. So here we come across to know what thermal conductivity is. We will be learning what thermal conductivity is. So अगर हम Fourier's law of heat conduction देखें, so it is Q equals to minus K dt by dx. Supposing if let us
चेंज द इक्वेशन, k हो जाएगा q dx 1/a 1/dt. लेट अस कैंसिल द नेगेटिव साइन बिकॉज मानते हैं वो नेगेटिव साइन इस dt में आ गया है. If I will take x as 1, a as 1, dt as 1, how can I express this thermal conductivity? So thermal conductivity then will be expressed as the rate of heat transfer through a block of unique dimension per unit area of the isothermal wall and unit temperature difference. That means the रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि एक यूनिट एरिया सिस्टम एट ए यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है और उस सिस्टम का थिकनेस 1 है. हीट ट्रांसफर में कंडक्शन क्या दिखाता है? हाउ द एनर्जी इज बीइंग कंडक्टेड और ट्रांसफर्ड थ्रू अ सिस्टम. So what heat conduction, thermal conductivity in heat transfer states you? Mathematically, it states you this: per unit area, per unit temperature difference, and per unit thickness of a material, the rate of heat transfer is known as the conductivity. Physically, what does it mean? Thermal conductivity of a material shows how fast a heat can transfer or can conduct through the material. So this means अगर मेरा थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इफ मेरा थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. If the thermal conductivity is high, it's a good conductor. If it is low, it's a good insulator. Thermal conductivity is one of the thermophysical property of a material. What thermophysical properties are? The properties of a system that depends on the temperature as well as some characteristic of the substance. Physical characteristics of the material system is called as the thermophysical properties, such as density, viscosity, specific heat, thermal conductivity. All this comes under the thermophysical property. So एक thermal conductivity एक material की property होती है. Just remember, this is a very good important point, that thermal conductivity is a thermophysical property of a system. So एक चीज इसमें आ जाता है कि solid, liquid और gas है. Solid, liquid और gas में thermophysical properties जो थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से होगी. हमने ये पढ़ा कंडक्शन क्या होता है. कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ सिस्टम बाय लैटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन सॉलिड द लैटिस स्ट्रक्चर, द लैटिस इज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, सो कंडक्शन उनमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड देन एज कंपेयर टू गैस. दैट मीन्स द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड विल बी हायर as compared to liquid, as compared to gas. That has been mentioned over here. And for some examples, here are certain that water's thermal conductivity is 0.628, air is 0.026. Okay, यहाँ पे मैंने dimension नहीं लिखा है because we have to exercise it now, that what will be the dimension of thermal conductivity B. तो अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा K is equals to Q divided by A divided by delta T into X. So हीट ट्रांसफर का यूनिट है वाट, एरिया का 1/मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का 1 केल्विन, इसका मीटर. सो द यूनिट ऑफ के क्या आया? वाट पर meter Kelvin. As it is temperature difference Kelvin, I can also write it as watt per meter degree Celsius. Why? Because it is delta T and we know degree Celsius और Kelvin में difference कितना होता है? 273.15, isn't it? So मैं delta T में Kelvin लिखूं या degree Celsius लिखूं, it won't matter much. So the unit of K sometimes can be write as watt per meter Kelvin, sometimes we can write it at watt per meter degree Celsius. So हमने पढ़ा कि एयर का सबसे कम होगा 0.026, फॉर एग्जाम्पल वाटर का 0.6. इफ वी टेक मेटल इट्स 405. बट इफ यू गो ऑन टू अ डायमंड, डायमंड का लैटिस स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड, हार्ड एंड बहुत ही
क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, दैट इज 2200 के रेंज में. So if we will segregate and see, this is the range of the thermal conductivity जो कि हमने previous slide में डिटेल में देखा. If you want, you can note this down कि this is the range of the thermal conductivity for different materials. So water का 0.628, air का 0.026, glass wool का 0.075, steel ranges from 14 to 45, aluminium in the range of 200, copper in the range of 385, gold in the range of 405, diamond in the range of 2200. So हमारा हीट कंडक्शन प्रोसेस जब एक किसी सिस्टम के थ्रू होके जाता है, इट हैज टू अंडरगो टू थिंग्स, व्हाट, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस वाइब्रेशंस. सो इन केस ऑफ सॉलिड व्हाट हैपेंस प्राइमरीली, हमें पता है सॉलिड्स में एटम एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में होता है. इफ वी मूव ऑन टू एनर्जी, हमें पता है हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर डिफरेंस. Internal energy of a system encompasses kinetic energy, potential energy, and some intermolecular forces of attraction. The segment of the internal energy that is associated with the kinetic energy, shows the sensible energy part. Sensible energy क्या दिखाता है कि आपका जो atoms और molecules हैं, how strongly they are bonded to each other. Then if we are going further, हमने और थोड़ा एनर्जी दिया and this bond breaks, the system will go through a phase change processes. The energy that is associated with the phase change process is the latent heat. तो इन केस ऑफ सॉलिड अगर हम देखें, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, उनके बीच दो मोड से हीट ट्रांसफर होगा, लैटिस वाइब्रेशन एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इनको हम अगर ऐड करें, द थर्मल कंडक्टिविटी विल बी अ कंपोनेंट दैट इज एसोसिएटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट एंड अ कंपोनेंट दैट इज एसोसिएटेड टू द लैटिस पार्ट. The electronic part is inversely proportional to the electrical resistivity. Means if higher is the electrical resistivity, lower will be the thermal conductivity associated because of the electrons, flow of electrons. So pure metals में resistivity low होती है, तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डोमिनेट कर जाता है लैटिस वाइब्रेशन को. इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, जहां पे आपकी रेजिस्टिविटी मेटल्स से थोड़ी ज्यादा होती है, वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस वाइब्रेशंस मतलब इतना कोई मतलब मच वेरिएबल नहीं हो पाता है, एंड दे इक्वेट्स एट सम स्टेट. तो इफ द रेजिस्टिविटी इज हाई, the motion of free electrons would be low, and what will happen then? So contribution of this Ke will be less or more. Why? हमने अभी पढ़ा resistivity is inversely proportional to the thermal conductivity associated to the flow of electrons. Pure metal, low resistivity, high dependence on the motion of free electrons. Non-metals, high resistivity, so the electrons motion of free electrons component of the thermal conductivity will be lessen or no much variation than as compared to the lattice vibration. So इसके ऊपर में ही we will move on and see there are some gate questions, previous year gate questions till this part, and we will see how the gate has been the questions has been asked. So let us move on to two questions from the gate that we have in seen considered. So पहला गेट का क्वेश्चन एक 1996 में आया था. If you can see over here, okay, let me zoom some more over here. That in 1996 में था कि फॉर अ गिवन हीट फ्लो एंड फॉर सेम थिकनेस, मीन्स अगर मेरा एक सिस्टम है जिसका थिकनेस सेम है और उसके अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है, द हीट ट्रांसफर रेट इज सेम, द टेम्परेचर ड्रॉप विल बी मैक्सिमम फॉर, द टेम्परेचर ड्रॉप विल बी मैक्सिमम फॉर. मीन्स व्हाट इट इज आस्किंग, इफ आई हैव अ सिस्टम, सिस्टम का थिकनेस सेम है और क्यू जा रहा है,
temperature drop means this one, T1 and T2. So this dt by dx, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt by dx. So the dt by dx is also, we can say, the slope of the curve और the temperature gradient. तो temperature gradient एक यहाँ पे है, temperature gradient can be this and it can be this also, means dt by dx, dt can be 0 and dt can be very high. dt 0 कहाँ पे होगा, if there is a substance जहाँ पे मैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे वही टेम्परेचर है, मीन्स इस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है. ओके, सो if T1 and T2 is in such a way that T1 is equals to T2, that means the K is very very high. Supposing if dt by dx इस केस में 0 हो जाएगा, supposing if the dt is very high, that means dt by dx will be high, the slope will be greater. इसका क्या मतलब है, the heat is not being able to conduct through the surface in a very good manner. So इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का टेम्परेचर डिफरेंस बाय जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा. सो इट इज़ आस्किंग द टेम्परेचर ड्रॉप विल बी मैक्सिमम फॉर कॉपर, स्टील, ग्लासुल, रिफ्रैक्टरी. सो कॉपर का क्या रहता है थर्मल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 385, हमने अभी पढ़ा है, वाट पर मीटर केल्विन. स्टील का सपोज लेट्स टेक 14.7 वाट पर मीटर केल्विन. ग्लासुल का 0.07 वाट पर मीटर केल्विन और रिफ्रैक्टरी का इट्स समवॉट अराउंड दिस 0.4 वाट पर मीटर केल्विन. सो सबसे कम मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है ग्लासुल का. यस और नो, इफ ग्लासुल्स थर्मल कंडक्टिविटी इज द लोएस्ट, तो ये स्लोप सबसे हाई किसका होगा, ग्लासुल के लिए. सो द आंसर विल बी ग्लासुल. ओके, यानी द ग्लासुल विल हैव मोर टेम्परेचर ड्रॉप कंपेयर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो glasul, then refractory, then steel, then copper. Now another question, arrange in descending order of magnitude of thermal conductivity. It has come in 2001 of GATE. देखिए इसका क्या है, प्योर आयरन, वाटर लिक्विड, वाटर सैचुरेटेड वेपर, प्योर एल्यूमिनियम. सो हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हाई टू लो. प्योर एल्यूमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी इट इज अराउंड 280, प्योर आयरन का इट इज समवॉट अराउंड 40, लिक्विड वाटर 0.628, वेपर वाटर 0.026. सो द डी विल कम फर्स्ट, देन ए, देन बी, देन सी. दिस इज द आंसर. सो हमने अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से ये दो क्वेश्चंस आए हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि how to correlate the thermal conductivity, but prior to that we have to go through the rest of the topics that we will be covering in this thermal conductivity portion and application. Now let us move towards the slide where we have left behind. So now we are clear about okay what this thermal conductivity is for the solids and pure metal, and we know that if the temperature will increase in the case of gas, the vibration, lattice vibration will be more, means its thermal conductivity will increase. गैस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. सो एज इन सॉलिड, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उनके बीच में वाइब्रेशन होगा, thermal conductivity बढ़ेगा, पर we increase the temperature beyond a limit that its molecular interaction breaks, it will start turning into liquid. What will happen to its thermal conductivity? It's my question, have it in mind, and we will discuss on this later on. So now we will be studying on this insulation systems in the subsequent classes. Hope
till this portion of the thermal conductivity is clear to everyone, and gradually we will be moving to the insulation systems and will be carrying forward on. यहाँ तक अगर आपको कोई भी confusion है तो हम discuss करेंगे, and once this conduction is completed, thermal conductivity portion is completed, we will directly go and we will analyze the previous get your questions on the thermal conductivity, and we'll complete this section. So in the next class we'll start from analyzing the insulation system and we'll go on solving more problems on the thermal conductivity sections. Hope this much is clear to you. Thank you.